पीडीएफ पेज। ठीक है, पीडीएफ पेज नंबर शुड बी 333। नहीं, क्या है ये, एक मिनट ना, 233। एक्चुअली वो बीच में आ रहा था लाइन रिकॉर्डिंग का, तो इसलिए। कौन सा वाला 319? 320। 319 टू अकेले कर लेना, वो बहुत इजी है एक्चुअली। 319 अच्छा अच्छा। लाइक वो पहले वाले वेरिएंसेस है, ओल्ड वेरिएंसेस। एक ओके बेसिक प्रैक्टिस के लिए भी है। ओके बा। अभी हमने कौन सा लिया? 320। Calculate the total mix variance and the total material yield variance for September. Material mix variance and total material yield variance for September, 8 मार्क के लिए है। The Safe Soap Company makes environmentally friendly soap using three basic ingredients. The standard cost card for one batch of soap for the month of September was as follows: material Lee coconut shea butter, kilograms, price per kilogram. The budget of production and sales in September was 1,20,000 batches. The actual production and sales was 1,36,000 batches. The actual ingredients used were as follows. तो ये अपने इनपुट है। ओके ओके, लेट्स सी देन। ओके, लेट्स डू इट। Variance and total material yield variance. और सबसे मटेरियल। मिलता है। बोल बोल। नहीं नहीं, मटेरियल यील्ड और ये दोनों ढूंढने का है ना हमें? हाँ, देख, आई एम ओवर थिंकिंग मे बी, लेकिन क्यों? क्या हमें इसमें भी वो करना है, प्लानिंग और ऑपरेशनल की नहीं? आपके सोच को कीड़े पड़े। मेरे तो कीड़े पड़े जावे, आई बड़ी। यहाँ पे मैं इतना खुशी खुशी मिक्स करना चालू की हूँ। अरे मतलब तू खुद सोचना कि इतना सिंपल ये लोग कैसे देंगे यार, मतलब मैं अभी एग्जैक्टली 8 मार्क के लेकिन लिए, मैं खुश आठ हूँ थोड़े दिन के लिए। मार्क, 8 मार्क्स के लिए, वो भी क्रेजी भाई। मैं तो फैन हो जाऊंगा इतना ऐसा देंगे तो। हो सकता है, ऐसे क्यों ये नहीं हो सोच, सकता है। ये सोच को कीड़े पड़े। अरे जावे, हो सकता है कि तो नहीं हो पर के सकता लिए है, ये एक ही तो जो चीज है जो फिजा को आ रही है। एग्जैक्टली। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। सब आएगा तेरे को धीरे धीरे। हाँ पर देर लगे। लाए, कोको नट। सोच फिजा, तू इस बार 2 पेपर साथ में देने का सोच रही थी। वो तो अच्छा हुआ अगर कि मैं मैंने 60 मैंने में। तेरे को रोक दे कि नहीं 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 नहीं, करके 83232। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा है। This is this my ओ भाई, ये क्या मिक्स आ गया भाई, ये तो कुछ क्रेजी सा मिक्स आ गया मेरे को। अच्छा मेरे को एडवर्स आ रहा है। वो प्राइस है। मैंने क्या कर दिया, मैंने प्राइस का मिक्स निकाल दिया। 1.35। 0.35।
तूने कर भी लिया? सिर्फ मिक्स वाला किया है। मैंने प्राइस के साथ कर लिया भाई, क्रेजी गलत हो जाता, सम अगर क्लोज भी जाता तो। 10 4 3। देखो ये मेरा कैसा होगा वो देखा जाएगा, रुक जा। सबसे पहले तो अगर मेरा ये ज्यादा होगा तो खराब चीज है ना, तो मेरे को इसको बेस रख के चलना है इसके लिए। तो भाई ये क्या हो गया, ई में क्यों जा रहा है चीज, है? ई में क्यों जा रही है ये चीज? बहुत ही वियर्ड चीज आ रही है मेरे को ई में आ रहा है, मतलब वो आंसर अपन एटर्निटी करते हैं पता है वैसा। हाँ नहीं, मेरे को वैसे नहीं आ रहा है, गलती से मैंने। ठीक है, आंसर इज 5826 एडवर्स ना, हाँ। बस वो इम्पोर्टेंट है। तो और क्या? मटेरियल यील्ड वेरिएंस किया तूने? हाँ, वो भी किया तूने, फॉर्मेट में किया कि कैसे किया? एक्सेल में, फॉर्मेट में किया। मतलब कैसा था तेरा एक्सेल का फॉर्मेट? जैसे रहना चाहिए, ए क्यू ए एम, ए क्यू एस एम, वेरिएंस, प्राइस, और लास्ट में। क्या बात करी है यार, सही है। क्वांटिटी स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी कितना है को वो निकालना पड़ेगा ना, सो अगर मेरा 1 के यूनिट के लिए 1.35 लग रहा है, आई जस्ट होप अभी ये करेक्ट निकले, मैं तो खुश हो अभी जाऊंगी। मेरा आता है फेवरेबल ही आ रहा है ये तो मेरा, नाइन हाँ, नाइन। फेवरेट। अभी चेक करना अपना आंसर सही है कि गलत है। ठीक है। तो पहले वाले का 5826.69 एक्वर्स है, और दूसरे वाले का 9898.69 फेवरेबल है। बस बराबर है ना, चलो ठीक है, अपना इतना बराबर आया। हाँ, परफेक्ट। अब बाकी सब तो परफेक्ट थ्योरी परफेक्ट। है। लेट्स मैं चेक। सुकून से सोऊंगी। Briefly explain what the adverse material mix and favorable materials yield variance indicate about production at Safe Soap Company in October. You are not required to discuss the revision of standards or operational and planning variances. फिजा तो उसी में मैं पागल हो गई और ये हो गई, जो कि प्लानिंग और ऑपरेशन की बात ही नहीं करनी है, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। तो एडवर्स मटेरियल मिक्स वैरिएंस और फेवरेबल मटेरियल यील्ड वैरिएंस, एक एडवर्स मटेरियल मिक्स वैरिएंस का ये मतलब हुआ कि हमने ज्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल को, द हाई वी हैव यूज्ड द एक्सपेंसिव मटेरियल मोर इन द प्रोडक्शन, और मोर इन द, हाँ, मोर इन हाँ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। एंड फेवरेबल मटेरियल यील्ड वैरिएंस का ये मतलब हुआ कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मिक्स, the materials the yield has increased। लेकिन इट इज बेटर और नॉट ये पता नहीं, ये अपना चेक चाहिए, अपने जरा करना पड़ेगा चेक। इन अक्टूबर द मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस एज फॉलोज, तो ये 4 मार्क के लिए है। ओके। Production manager is pleased with the results overall, stating at the beginning of September I made some changes to the mix of ingredients used for soaps. As I expected, the mix is adverse in both months because we haven't yet updated our standard cost card. But in both months, the favorable yield variance more than makes up for this. Overall, I think we can be satisfied that the changes made in the product mix are producing good results and now are able to produce more batches and meet the growing demand for our products. The sales manager, however, holds a different view and says, I'm not happy with this change in the ingredient mix.
I have had to explain to the board why the sales volume variance for October 20. Oh, for October was 22,000 adverse. I've tried to explain that the quality of soap has declined slightly, and some of my customers have realized this and simply are unhappy, but no one seems to be listening. Some customers are even demanding that price of the soap be reduced and threatening to go elsewhere if the problem isn't sorted. अच्छा, मुझे तो लगता है यहाँ पे पहले कुछ में तो सिर्फ ऐसी बात करनी है. Adverse material, favorable material given indicate about producing about production at Safe Soap Company in October. So the अक्टूबर में जितना था उससे कम हुआ है सितंबर में, अगर देखा जाए तो. अक्टूबर में 6,000 एडवर्स था मिक्स, और अभी हमारा 5,826 आया. नहीं, पहले हमारा 5,826 आया, अभी हमारा 6,000 एडवर्स है. सितंबर. हमने कौन से मंथ का निकाला है? हमने सितंबर मंथ का निकाला है, अभी अपन ओके, अक्टूबर मंथ सितंबर में का बैठे हैं. निकाला है. हाँ. ओके. और 10,000 फेवरेबल, तो सुधार तो नहीं आया कुछ. द तो फेवरेबल इसलिए हुआ है बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द मिक्स. ठीक है. some this might attract new customers, however the old customers that were happy with the previous mix might not stay longer with the company, or might change their brand, is what I'm trying to say. Check करना है क्या आंसर. आंसर. Material mix variance will occur when actual mix of materials used in the production is different from the material from the standard mix. So it is inputs which are being considered. Since the total mix variance is adverse for Safe Soap Company, this means that the actual mix used in September and October was more expensive than the standard mix. A material yield variance arises because the output which was achieved is different from the output which would have been expected from the inputs. So, whereas the mix variance focuses on inputs, the yield variances focuses on outputs. In both September and October, the yield variance was favorable, meaning that the inputs produced a high level of output than one would have expected. अच्छा, मतलब हम लोग ज्यादा बना पा रहे हैं. नॉट कि हमने उतना बेचा है, हम लोग ज्यादा बना पा रहे हैं हम लोग ज्यादा समझ. बिकॉज ऑफ दैट चेंज. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भले ही द इवन दो द इनपुट्स हैव डिक्रीज एंड द आउटपुट्स हैव increased, the inputs have decreased and the outputs have increased, that there is no guarantee that the amount would be sold, as some customers might not like that product or might not prefer the mix of the product. बराबर. नीचे. ओ सॉरी, ये बहुत ज्यादा नीचे आ गए थे. नहीं, बराबर है. हाँ. Discuss whether the sales manager could be justified in claiming that the change in the material mix has caused an adverse sales volume variance in October. सेल्स मैनेजर होल्ड डिफरेंट व्यूज, नॉट हैप्पी विद द चेंज. उसने जस्टिफाई किया है ना कि वो खुश नहीं है सेल्स के साथ. It 22,000 it was sales volume variance. इट इज क्वाइट जस्टिफाइबल ना, बिकॉज सी क्या हो गया कि अपने मिक्स चेंज किया तो अपने कस्टमर्स गुस्सा हो गए, तो वो लोग ने नहीं लिया अपना. भले ही आउटपुट बढ़ गया, लेकिन जो अपने अभी अगर नहीं बिकेगा तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम आएगा. सेल्स वॉल्यूम वरायंस, हाँ एक्चुअली ना, सी सेल्स वॉल्यूम वरायंस हिट हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द Act- मिक्स the output will increase. But if that output is not being sold to the customer, then the sales volume variance will be adverse. decrease. हाँ, it was that. Just एक second. चेक कर लेते हैं अभी. Whilst the mix and yield variances provide safe soap with a certain level of information, they do not necessarily explain
any quality issues which arise because of the change in mix. The consequences of the change may well have an impact on sales volume. In Safe Soap Company's case, the sales volume variance is adverse, meaning the sales volumes have fallen in October. It is not known whether they also fell in September, but it would be usual for the effects on sales of change in mix to be slightly delayed. In this case, by 1 month, given that it is only once the customer start receiving slightly altered soap that they may start expressing their dissatisfaction with the product. There may also हाँ be तो other reasons for the adverse sales volume variance, but given the customer complaints which have been received, the sales manager views should be taken on board. लेना Last, तो चाहिए। critically discuss. ऊपर से सोप है। क्या क्या बोल बोल। मैंने बोला ऊपर से सोप है। जो भी मिक्स एंड मैच हो रहा है बहुत ध्यान से करना चाहिए। हाँ, critically हाँ, discuss the types of standard used in standard costing and their effect on employee motivation. आइडल, करंट, Current, एटेन्यूएबल variable, और कौन सा है? basic. बेसिक, हाँ बेसिक। So idle standards might demotivate the employees as these standards are considered to be perfect. Thus, there is no ideal time, there is no breakdown time available. हाँ, Attainable standards, एटेन्यूएबल तू बता। नहीं पता है। Attainable मेरे को standards नाम पता है। are the standards that can be achieved with the given level of input. As these standards can be achieved, the employees might be very motivated to achieve such standards. Uh, Current standards के बारे में क्या ही बोलेंगे? Current standards are based upon the current ongoing situation or circumstance. करंट और बेसिक में डिफरेंस क्या है? Basic standards are very easy to achieve, और मतलब ऐसे कि like these are very basic standards, achievable standards, ऐसा मतलब easily achievable standards, so these might demotivate the और, employees. और करंट Current standards are the standards that we are currently using in the organization. बहुत ही इतना स्लाइट डिफरेंस क्यों डिफरेंस है, बता? बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, पर बहुत ही मेन डिफरेंस है. सोल्यूशन। Theory of motivation suggests that having clearly defined target results is better performance than having no target at all. That targets need to be accepted by the staff involved, and that more demanding targets increase motivation provided they remain accepted. It is against this background that basic, ideal, current, and attainable standards can be discussed. The basic standard is one that remains unchanged for several years and is used to show trends Yes. over time. Basic standards may become increasingly easy to achieve as time passes, and hence, being undemanding may have a negative impact on motivation. Standards that are easy to achieve will give employees little to aim. Ideal standards. आइडल। Ideal standards represent the outcome that can be achieved under perfect operating conditions with no wastage, inefficiency, or machine breakdowns. Such persons' perfect operating conditions are unlikely to incur for any significant period. Ideal standards will be very demanding and are unlikely to be accepted as targets by the staff involved, as they are unlikely to be achieved. Using ideal standards as targets is therefore likely to have a negative effect on employee इफेक्ट motivation. एम्प्लॉय मोटिवेशन। करंट, मैं पढ़ू क्या? पढ़ पढ़. Current standards are based on current operating condition and incorporate current level of wastage.
inefficiency and machine breakdown. If used as target, current standard will not improve performance beyond its current level, and their impact on motivation will be neutral one or a negative one, since employees may feel unmotivated due to lack of challenge. तो बेसिक लॉन्ग टर्म के लिए और करंट शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं ना. हम्म. Attainable standards are those that can be achieved if operating condition conform to the best that can be practically achieved in terms of material use, efficiency and machine performance. ये तीनों में आएगा. Attainable standards are likely to be more demanding than current standards. Okay. And so will have positive effect on employee motivation provided that employees accept them as achievable. Hmm. नाइस. काफी अच्छा. पता है मेरे को, ये आंसर अगर आ गया तो ठीक है, मतलब आई माइट नॉट, मेरे को ठीक है, मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा ये वाला, को लग रहा है. अच्छा था.